us, all of us. I restrict myself to a few things. Firstly, my compliments to you, the young children who came just now and spoke about the sports policy of Bihar. Let's talk about that first. First of all, you were very articulate. Your English diction was perfect. Your Hindi was very good. I'm glad that this is the kind of approach you have to public speaking. Madam, public speaking is one of the most important aspects in life. If a child can overcome that fear to stand in public and speak, I think half his battle, half the challenges that he's going to face in the world are over. Anyone who's shy inside, and there are many of us who are shy. I can tell you, I was the shyest. People tell me कि जब मैं बच्चा था ना, तो मैं अपनी माँ के पल्लू के पीछे छुपा था. I was always behind my mother. I never had the confidence to come forward. मेरे बड़े भाई हैं, elder to me, very confident. He could go and speak anywhere, this, that. I could never. धीरे-धीरे, I was a slow learner. धीरे-धीरे उभरा. Today you put me in front of anything, I can go and stand and speak. But it didn't come overnight. ये मेहनत के साथ है. आधी इशू पब्लिक स्पीकिंग में होती है कि आपको नॉलेज होनी जरूरी है. Without knowledge you can't do public speaking, which means you must read very widely. जो पढ़ने को मिले आप पढ़िए, जो कुछ जिस एक फोकस तरीके से पढ़िए, मगर जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए. फॉर एग्जाम्पल, अखबार पढ़ना, न्यूज़पेपर. आजकल का मॉडर्न टाइम जो है, पीपल आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, दे आर रीडिंग इट ऑन देयर सोशल मीडिया. मॉर्निंग के न्यूज़ में सुन लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, दे थिंक इट इज सफिशिएंट. दैट इज नॉट सफिशिएंट. I started reading newspapers when I was in class 5, class 4, class 5. Today I read 6 newspapers in a day. And talking of sports policy, the first page I read in any newspaper is the sports page. Always. My knowledge of sports is deep. I've read very deeply over the years, many years. I've read about sports. Favorite being cricket. Like any other Indian, favorite is cricket. I follow Vaibhav Suryavanshi all the time. I'm all the time supporting him and tweeting about him and things like that. I'm a great fan of Vaibhav Suryavanshi. I'm a great fan of many other cricketers in India. And today I find cricketers are emerging in Bihar. कितने बढ़िया cricketers आ रहे हैं बिहार. Undivided बिहार से तो महेंद्र सिंह धोनी भी था. From now from Jharkhand. So Bihar has had its own share of heroes, sporting heroes. बहुत बढ़िया यहाँ पर है. Subhada Sriram, one of the great marathon runners of India, also Bihar. हमारी आर्मी के थे. तो sports, no doubt, government of Bihar is putting a lot of emphasis on sports. Sports university, sports center पूरा राजगीर में बन रहा है. आपकी sports minister खुद ही एक मेडलिस्ट है, श्रेयसी जी. I keep speaking and discussing a lot of things about sports to her. She's a sports person as well. So, continue taking interest in sports. और कुछ नहीं तो दुनिया में सबसे अच्छी चीज बात करने के लिए किसी भी स्ट्रेंजर के साथ, आप हवाई जहाज में बैठे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं और आपके साथ कोई बैठा है, तो you may want to start discussing something. Best thing is दो सब्जेक्ट है मेरे, एक स्पोर्ट्स और अगर कोई यंग लोग हैं मेरे साथ तो मैं बॉलीवुड की बात करूँ. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ बॉलीवुड. तो ये नहीं कि बिहार का गवर्नर बन गया तो मैं सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करूंगा और डेवलपमेंट की और इकोनॉमिक्स की, मगर लॉट ऑफ अदर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट. एजुकेशन जो है इज समथिंग बियॉन्ड. क्लासरूम में बैठकर एग्जाम पढ़ना इज वेरी गुड. Also, it's the start point of education. But असली एजुकेशन आता है जब माइंड को आप हिलाते हैं. You look around you, everything around you has to have some aspect of interest. अब you belong to Bihar.
जब मैं आया बिहार में एज गवर्नर, तो मैंने अपने आप को एजुकेट करना दोबारा शुरू किया। पहली चीज देखी मैंने, आई फाउंड नालंदा। व्हाट डू आई नो अबाउट नालंदा? नालंदा की रूइंस देखी जाकर, नालंदा की नई यूनिवर्सिटी देखी, बोध गया गए देखा। आई रियलाइज्ड बिहार्स ग्रेटनेस ले इन नालंदा। एंड नालंदा से भारत की संस्कृति, कल्चर ऑफ इंडिया had spread all over the world, particularly into Southeast Asia. I realized that civilization, यहाँ पर एक पूरा civilization का बिहार, richest civilization of India was here. मगर बाकी तो नालंदा, राजगीर, यहाँ से कितने बड़े बड़े religion निकले। So we must know more about this and must speak more about it. मैंने एक नई शुरुआत की है, इट्स कॉल्ड द नालंदा अप्रोच। नालंदा का तरीका, हाउ कैन वी अडॉप्ट नालंदा, द लर्निंग ऑफ नालंदा टू इंक्लूड इट एज पार्ट ऑफ आवर डिप्लोमेसी। और डिप्लोमेसी में क्या, एक दूसरे के साथ कल्चरल टाइज अगर हम कायम करें, उससे शांति बनती है, पीस। सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दैट, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Other few issues of character, how to become a good human being as you grow up. मैं उनमें से हूँ जिन्होंने अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में कभी भी एक प्राइज नहीं जीता। ऐसा बड़ा प्राइज मैं देखता था, बच्चों को जाते हुए मेडल लेकर जाते थे, हाथ में किताबें लेकर जाते थे। I was always second best, right? I was never the best. प्राइज मिलता है बेस्ट। मगर जब मैं आर्मी में आया तो मेरे नाम के सामने 6 तख्ते लगे। आर्मी ने मुझको हर प्राइज दे दिया, हर कोर्स में गया, वहां मेडल लेकर आया। क्यों? मेहनत। आप कहीं से शुरुआत करो, आपको बस कुछ नहीं है। You can attain everything through your sheer hard work. जब कोर्सों के ऊपर, जब मैं आर्मी के कोर्सेज जो होते हैं हमारे, उस पर जाता था, तो लोग रात को आराम से खाना पीना खा के 10:30 बजे सो जाते थे। मैं कभी 2:30 बजे से 3 बजे से पहले नहीं सोता। I was always running at night 3 o'clock. सुबह 5:30 उठ गए, पीटीवी की, and it is through this sheer hard work I realized I was not so intelligent. I needed more hard work to achieve something. So hard work never left me, and hard work must never leave you. आप जितने भी intelligent हो, जो कुछ भी हो, remember, लगे रहो, परिश्रम, have to be at it. Make your parents proud, make yourself proud, make your parents proud. Make your teachers proud, make your school proud. The teacher-student relationship. आज भी 15 अगस्त को मैं सोशल मीडिया पे एक ईमेल लिख रहा था। It was a group email. उसमें याद कर रहा था मैं अपने उन टीचर्स को 1966, 67, 68 में, जिन्होंने मुझे हिस्ट्री सिखाई, जिन्होंने मुझे हिस्ट्री सिखाई थी। उन्होंने सबसे पहले मुझे खाड़ी में जो युद्ध हो रहा है अभी, उस खाड़ी के युद्ध का उस वक्त शुरुआत जो थी 66, 67 में, वो सिखलाई थी। मैं कभी नहीं भूला। उस वक्त भी मैंने सवालात किए थे, अभी भी अपने आप से मैं सवालात करता हूं। I'm still questioning myself. How much do I know? 66, 67 से 2026 देख लीजिए, मैं भारत का नुमाइंदा बन के गया ईरान। अभी नदीम और मैं दोनों गए, हम ईरान गए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें लुक किया कि आप जाइए भारत को रिप्रेजेंट करिए ईरान में, जब वहां पे उनके लास्ट प्राइस हो रहे हैं हम गए। और इसके बारे में सीखा कहा था,
सियासत सियासत 60 साल पहले मेरे उन टीचर्स ने सिखाया था। योर टीचर सिटिंग विद यू हियर ऑन गॉड, भगवान है। यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशनशिप, दिस स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। ये भारतीय परंपरा में दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और दुनिया में कहीं शायद लोग भूल जाए, मगर हमारे परंपरा में भारत में ये जो रिलेशनशिप है ये हर वक्त कायम है। बाकी आई कैन स्पीक फॉर द नेक्स्ट 5 hours, बट आई डोंट trouble you with that. Let me just end up by saying one of the very important qualities of life, besides being inquisitive, ये क्योंकि आपकी प्रिंसिपल मैडम, टीचर्स, स्टाफ जो है, दे आर देमसेल्व्स इंक्विजिटिव, दैट इज व्हाई दे हैव ब्रॉट यू हियर। क्योंकि उनके अंदर इंक्विजिटिवनेस थी कि हमारे बच्चों को ज्ञान मिलना चाहिए, सम नॉलेज, एजुकेशन अबाउट व्हाट इज लोक भवन, लोक भवन में क्या होता है, राइट? So, first of all, we must thank them tremendously for giving you this opportunity and occasion to come here today. But since you've come here, let me take 1 minute to tell you what is Lok Bhavan, what is the responsibility of the governor of a state. The governor of a state is like the president of India. He is the president. The president is for the whole of India. The governor is for one state. There are 28 states in India and 8 union territories. Union territory आपको समझाएंगे आपका स्टाफ। 28 स्टेट्स, हर स्टेट में एक सरकार होती है, चुनी हुई सरकार, which is elected by majority, and you have a chief minister and a cabinet. But above them all, you have a constitutional authority appointed in the name of the President of India. That is the governor of the state. The governor of the state is normally an eminent personality from some professional or other walk of life. Impeccable character, impeccable credentials, he should have achieved something in life. And he comes and occupies the Lok Bhavan. The Lok Bhavan is an institution, a constitutional institution. There may be different kinds of responsibilities in different states. In Bihar, for example, I look after higher education. I am the chancellor of 17 universities of Bihar. And I am responsible for the appointments, the policy, etc., everything to make sure that the education system runs efficiently. I know it is not running very efficiently at the moment in Bihar. We are making lots and lots of efforts to try and improve. By the time you come up to the higher education status, I can assure you Bihar will have a much, much better higher education system. Remember one thing about this, since we are talking about that, people of Bihar run the whole of India. Remember this, people of Bihar run the whole of India. बिहार के निवासी जाते हैं, पूरे देश को चलाते हैं। सिविल सर्विसेज में देखिए आप, पुलिस सर्विसेज में देखिए, सब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार के, राइट? मगर बिहार के अंदर we have not been able to run a lot of things here correctly, like the education system. अब इसमें सब बढ़ोतरी हो रही है, things are going to be improving very rapidly. Besides that, the governor is the father figure of the whole state. Unwritten things he is overseeing, the welfare of the state. The things are correct, the people are happy. If there are certain complaints, then those complaints must go to the government. They must get resolved. He is the connect between the center and Delhi and the state capital, which is here in Patna. And for this, he has got a very large staff. You can see some of the people here with me. You can see Officer of Special Duty, Colonel Nadeem. You can see the aide-de-camp, Major Krish. You can see Sudhanshu Saab. PRO here. He looks after public relations.
all aspects of information. And today's world is full of information. So he looks after information which goes out and comes into the local. So similarly, there are many other people here who have their different responsibilities. I hope and pray that one of you who's sitting in this hall one day comes back to become the governor of Bihar. Right? You should aim to be one day. Why only Bihar? Go anywhere. Anywhere. Must also remember the largest, perhaps the largest diaspora, people living abroad in the world. If it comes from any region, it is Bihar. And there are different segments. There's a working class, which is in the Gulf countries, in the Middle East. And then there is a white-collar class which works in the United States, many parts of the Gulf, in Europe, in Southeast Asia. I have one of them coming to me for dinner tonight. Mr. Abhishek Tiwari, his name is. He is the head of KPMG. KPMG, Human Resource Department in New York. He's from Bihar. Right from here, across. Similarly, many such people around the world are heading companies, heading organizations who belong to Bihar. There must be something about the soil of Bihar. There must be something about the intelligence in the DNA of people of Bihar, which is why they are reaching such places. So remember, you are from the same DNA. You are from the same soil. आपने भी वो पानी पिया है, आपने भी वही खाना खाया है. There is no reason why you cannot achieve the same. You can achieve much more than what they can achieve. And that is what I pray for. Thank you very much. Jai Hind and Jai Bihar.